Is that okay? Now the next thing we are going to do is dependence of angle of deviation. Angle of deviation किस चीज पर depend करेगा? The factors are, the first factor is angle of deviation depends upon the angle of incidence. But for a thin prism, it does not depend upon angle of incidence. Delta is equal to, actually पहला वाला point जो है इनका ये है सही नहीं. Thin prism के लिए doesn't depend upon angle of incidence, ऐसा नहीं है. It does depend on angle of incidence. ठीक है. Only the delta m, the minimum deviation angle जो है, minimum deviation angle, वो depend नहीं करता है angle of incidence पे. Is that okay? Yes, sir. Yeah, it always depends on angle of prism. Third, depends on refractive index of the material. Yes, it will always depend on refractive index of the material. In fact, delta increases with refractive index of the material. ये जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा delta होगा. If angle of incidence is 90 degree or at gassing angle, the deviation is maximum. Minimum deviation कब होता है? जब I1 and I2 same होता है. और maximum deviation कब होता है? जब angle of incidence 90 डिग्री हो, that is gassing incidence. तो gassing incidence का मतलब क्या हुआ? ये अगर prism है, if this is a prism and we are incidenting the ray of light almost parallel to this surface, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री लगभग हो जाएगा. और उस सिनेरियो में वी विल हैव अ gathering incidence. Is that okay? This is called gassing incidence. Making sense? Yes, sir. Okay. So gassing incidence per, we are going to have delta maximum if angle of emergence is 90 degree. Or gassing emergence, light ray has to reflect internally at second surface. And for this, R dash has to be greater than critical angle. That is, critical angle has to be, and critical angle is generally sin inverse 1 by mu. Critical angle क्या होता है? Critical angle is sin inverse 1 by mu, where mu is the refractive index of the denser medium. तो हमारा R dash जो है, जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पर, so what we are talking about is this. Hello. Hello. Back to discussion. What I was trying to explain is, ये R2 जो होगा, ठीक है, ये R2 मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तभी यहाँ पर, या क्रिटिकल एंगल हुआ तो गैसिंग इमर्जेंस होगा, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस नोट्स में एक दो पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं.
Point number 1. Minimum deviation delta minimum or delta M is independent of angle of incidence for minimum deviation again delta mean or delta M only is directly proportional to angle of prism A ठीक है तीसरी चीज minimum deviation is directly proportional to refractive index of prism, that is mu or mu1 or simply mu, whatever we want to call it. ऊपर में हम लोगों ने म्यू लिया है, mu1 लिया है, इसलिए मैंने mu1 लिखा है. Is that okay? In fact mu1 ही रहने देते हैं, otherwise बाद में पढ़ने पर मैं भी कंफ्यूज. ये तीन चीजें होती हैं हमारी. अच्छा एक चीज और, मिनिमम डेविएशन पर जब जा रहा होता है, at minimum deviation condition, minimum deviation अगले वाले पेज पर ये चीजें नोट हो गई, ये हो गई तो फिर नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं, वहां पर लिख दूंगा. ये नोट हो गया. Yes, sir. Can I go to next page? Yes, sir. मैं हाँ सर. कर्तव्य आपका नोट हो गया था. हाँ हो गया था. ओके. ओके. At minimum deviation condition,
for an isosceles prism the light ray moves parallel to the base of prism. Is that okay? Yes, sir. A pointer for maximum deviation. That is delta max angle of incidence should be 90°. Therefore, delta max will be equal to 90° plus I2 minus angle of prism. ठीक है? Noted. Noted. Sir, हाँ. I'm Note. not well, so can I leave the class today? क्या क्या? Sorry. I'm not feeling well, so can I leave the class? Okay, fine. Yes.
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके। इसमें लाइक ये दो छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिनिमम डेविएशन पर रे विद इन द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, बट दैट इज ट्रू ओनली फॉर आइसोसेलेस प्रिज्म। और दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो पॉइंट ये होता है, वो मैंने ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया है ऑलरेडी। इफ द प्रिज्म इज सेट इन सच अ वे दैट faces on which light is incidented and from which it emerges, जिस फेस पर लाइट आ रहा है और जिस फेस पर से वो इमर्ज कर रहा है, ये दोनों अगर पैरेलल होंगे then it is going to work as a transparent plate. So basically दो प्रिज्म अगर हम डालते हैं उल्टा करके, तो it behaves as a normal plate, glass plate. ठीक है? Now there are some specific condition of emergent rays which we are going to talk about. Limiting angle of incidence. So limiting angle of incidence का मतलब angle of incidence जो होगा वो 0 डिग्री होगा, almost normal to the first phase हम angle ये rays को incident कर रहे हैं. Let a monochromatic light ray PQ is incidented on face AB. The limiting angle of incidence is I1 for given refracting angle A. मतलब angle of prism is A. For any angle of incidence less than I1, the ray will be totally internally reflected from face AC, because angle R2 corresponding to it will exceed the critical angle for the given material. Okay. Therefore, for this case, I2 has to be 90 degree. ये I2 angle of emergence जो होगा वो 90 degree होगा. And R2 जो होगा that will be equal to critical angle. Is that okay? डायग्राम समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले एंगल को क्रिटिकल एंगल बना लिया हमने. ये I2 अगर है तो हेलो यस सर। बैक. तो ये R2 जो है R2 becomes equal to critical angle. Since A is equal to R1 and R plus R2, अगर R2 एंगल C है, क्रिटिकल एंगल है, तो R1 will become A minus C. Is that okay? और R1 plus R2 A क्यों है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इस ट्रायंगल में R1 plus R2 प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री है, और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और ये वाला एंगल 180 डिग्री है. इज दैट ओके? सो ए विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. पिछले वाले एक्सप्रेशंस वगैरह में हम लोगों ने किया है इस चीज को. ऑल्सो वी हैव, it is given that we have sin c is equal to 1 by mu. So for cos c will be equal to root under n square minus 1 by n. sin c अगर ये वैल्यू है, cos c is equal to root under 1 minus sin square c, that is root under 1 minus 1 by n square, which is root under n square minus 1 by n square. This will become root under n square minus 1 by n. Is that okay? Next thing is sin I1 by sin R1 should be equal to mu refractive index of the material. Sin R1 is equal to sin A minus C. Sin A minus C is sin A cos C. Cos A sin C. Sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B होता है, तो यहाँ पर B के बदले C है. sin A cos C minus cos A sin C. Is that okay? Sin A cos A
cos c के बदले वैल्यूज हमने रख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी जस्ट cos a. Just 1 second. So we were at this stage. सर हाँ बोलिए. सर वो मैंने एक्चुअली मेरा फोन साइन पे था इसलिए आपका फोन नहीं उठा था, फिर बाद में पता चला देखा. चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं. सॉरी अरे सॉरी नहीं, जल्दी ज्वाइन कराना था, मैं वेट कर रहा था इसलिए. सर, वो खाना खा रही थी ना सर शायद. ओके ओके, चलेगा कोई बात नहीं. हाँ, सो वी वेर एट दिस स्टेप. इसमें साइन ए तो कोई वैल्यू है नहीं, ए एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा हम लोग को जनरली, तो साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास रहेगी. बाकी सारी चीजें ये एन और ये एन भी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम sin a into this root under n square, that is mu square minus 1 minus cos a will be equal to sin I1, or I1 is equal to sin inverse root under n square minus 1 sin a minus cos a. Is that okay? अब बेसिकली एक बार इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं लिख करके, एंड यू गाइस कैन राइट इट डाउन. फिर गैजिंग इंसिडेंस, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन, इनके लिए हम लोग कर लेंगे, देन विल कम इनटू द डिस्पर्सन ऑफ वर्क. सो specific conditions of emergent rays. The first one being gassing emergence, that is I2 is equal to 90 degree. क्या क्या देख लो. ठीक है. So let us say we have this prism.
On the first phase, we have angle of incidence as this, or incident ray is coming like this. There will be this normal. नहीं है क्या था क्या था एक सेकंड वहां पर भी एक इरेजर गिरा हुआ है चेयर के नीचे ओके ठीक ओके सो and continuation of this line will create we will have angle of emergence along this. Is that okay? So that this angle becomes, this is I2 and this becomes equal to 90 degree. ये एंगल रहेगा R2 which is equal to critical angle C. This will be R1 and this will be I1. Refractive index of the material will be, this bar we will take it as refractive index of material of prism. Refractive index of material of prism is equal to mu. The relationships simple हैं. सबसे पहले phase 2 at phase AC, ठीक है. Angle of incidence क्या है R2, right? और angle of refraction क्या है I2. रे इधर से इधर जा रही है. Ray is going like this and finally like this. So phase 2 पर applying the law of refraction, we are going to have sine I2 upon sine R2 should be equal to 1 by mu. Sine R2 upon sine I2. I2 is angle of refraction and R2 is angle of incidence is equal to 1 by mu.
ये 90 डिग्री है, therefore sin R2 upon sin 90 degree will be 1 by mu. That implies sin R2 will be equal to 1 by mu. This implies R2 will be equal to critical angle C. Also, we have R1 plus R2 is equal to A. ये पिछले पेज पर हम लोगों ने प्रूव किया है। यहाँ पर we have it here in equation ये वाले पॉइंट का सिर्फ नाम लिख लेते हैं। ये P है, ये Q है और ये O है। तो बेसिकली एंगल POQ प्लस एंगल PAQ या एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल POQ। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंड ये एंगल का सम 180 डिग्री। R1 R2 प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री, देयरफॉर R1 प्लस R2 इज एंगल। यहीं से प्रूफ होता है, यही चीज हमने लिख लिया। देयरफॉर एंड R2 हमारा आ गया है इक्वल टू C, देयरफॉर R1 is equal to A minus R2, which is equal to A minus C. This is my R1. Now, at phase AB, for refraction, sin I1 upon sin R1 should be equal to mu. That implies sin I1 is equal to mu into sin R1 के बदले मैं लिखूंगा A minus C, and I'll open this bracket, so it will become sin I1 is equal to mu into sin A into cos C minus cos A into sin C. This is going to give me mu. Sin A is going to be sin A only,
cos c will become a root under mu square minus 1 by mu, and cos a will remain cos a, sin c will become 1 by mu. अब यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं as sin c is equal to 1 by mu, therefore cos c is equal to root under mu square minus 1 by, वापस से डेरिवेशन में mu, ये 1 by mu दोनों जगह से हम कॉमन लेकर के आ सकते हैं, so mu into 1 by mu is equal to root under mu square minus 1 into sin a minus cos a. ठीक है, this is equal to sin I, one the angle of incidence, or I1 is equal to sin inverse root under mu square minus 1 into sin A minus cos A. The next condition is, ये नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं. ऊपर से नोट किया हुआ है आप लोगों का, we want to note it all. नोट कर लिया हम लोगों ने.
R1 में जी gathering incidents gathering first phase पर at phase A at phase AB R1 will be equal to angle C critical angle due to gazing incidence. Similarly, at phase B, phase 2 that is AC, R2 will be equal to C due to gazing emergence. Is that okay? Therefore, as we know that R1 plus R2 is equal to A, R1 और R2 दोनों PC है, therefore 2C will be equal to A और C की वैल्यू क्या है? C will be equal to sine inverse 1 by mu. So for a particular angle of incidence, for a particular angle of prism, this thing is going to be true, and it will be true only when 2C is going to be equal to A. Okay. Next thing is maximum third condition is maximum deviation condition for maximum deviation this will take place when angle of incidence I1 will be equal to 90 degree. ठीक है? I2 is any other angle. अच्छा ये वाला देखो I1 और I2 दोनों 90 डिग्री हो रहा है. That is happening for a particular angle of A. अगर वो angle of A नहीं है available हमारे पास तो फिर दोनों 90 नहीं होंगे. ये वाला 90 हमारे कंट्रोल में है बट ये वाला 90 एंगल P के कंट्रोल में है. Are we getting this point? जब एंगल A एक पर्टिकुलर एंगल होगा तभी हमारा ये गैजिंग इंसिडेंस होगा. अदरवाइज इट विल गो टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो जब एंगल I1 90 डिग्री होगा देन R1 will be equal to critical angle I1 is 90 डिग्री. 90 डिग्री पर अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के अलोंग जाएगा. सो therefore R1 will be equal to angle C critical angle
vertical angles also also R1 plus R2 is going to be equal to angle A. Therefore, R2 will be equal to A minus R1 which is equal to A minus B. और ये वाला केस एग्जैक्टली फर्स्ट वाले केस के तरह का हो जाएगा इफ यू आर गोइंग टू लुक एट इट. इस बार I2 जो होगा वो मेरा वो एंगल होगा जो हमने एंगल I1. ठीक है, वी कैन सिंपली राइट इट एज, या जनरली सॉल्व करना है तो वी कैन सॉल्व इट sin R2 upon sin I2 will be equal to 1 by mu. That implies sin I2 by sin R2 will be equal to mu, और sin I2 के बदले में sin I2 मुझे कैलकुलेट करना है, sin R2 मुझे पता है, R2 is equal to A minus C, so I can write sin I2 will be equal to mu into sin A minus C. सारे सब्स्टिट्यूशन वही रहेंगे. यहाँ पर sin I2 will become equal to root under mu square minus 1 into sin A minus cos A. Is that okay? So इस बार I2 जो होगा मेरा that will become that. Making sense? Next thing is dispersion of white light by prism, that is angular dispersion. Okay, so we are, वो नोट हो गया आप लोगों का ये वाला पार्ट. ये डिस्पर्सन वाला पार्ट ना कल हम लोग करेंगे, आज के लिए बस यहीं पे रुक जाओ. ठीक है.